Okay, so let's start the class with the hydrolysis. आज हमें क्या करना है बच्चों? आज हमें break down करना है किसका polymers का in the presence of water, right? The hydrolysis is actually the breakdown of compound in the presence of water. तो आज हम कर रहे हैं polymers जिनको हम बना रहे थे काफी दिनों से और आज हम उनको तोड़ भी देंगे. Let's see what is hydrolysis, right? We know that बच्चों over here we talk about the polyesters यानी कि ester linkages, and we talk about polyamides means we talk about amide linkages as well. So you need to remember this, that these two bonds, or you can say that these two linkages are polar. They both are polar linkages, right? So if you subject them to the acid or basic, right, they can be hydrolyzed, right? So you can do one thing for them. You can even hydrolyze them, or you can break them in the presence of acid, or you can even do this in the presence of base. It is actually acid and base are going to catalyze this reaction. So you can say that it would be acid catalyzed hydrolysis and it would be base catalyzed hydrolysis, right? अब आपके पास सीन क्या है? सीन ये आपके पास कि भाई ये कार्बन है, इसका ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड भी है, इसका ऑक्सीजन के साथ सिंगल बॉन्ड भी है. So this is actually partial positive and this is partial negative. This is partial negative. So it's a polar compound. You can say that it's a polar bond as well. So it can easily be break in the presence of acid and alkali, right? Same as it is for the amide linkage as well. You have carbon and oxygen double bond, and you have nitrogen and like this bond as well. So it can also be break over here. It is partial positive, it is partial negative. It is partial positive, it is partial negative. So it can be break, right? So you can say that these bonds break down and the condensation polymers can come back to their monomers, right? So the polymer is going to be again the monomer, and you can say that this is actually one of the way to degrade the polymer. So it is actually what this is, degrading of polymers. This is actually degrading of polymers. The problem with polymers is actually they are non-biodegradable. They are actually non-biodegradable. This is the main problem with what? With polymers, right? So इनको तोड़ना हमारे लिए जरूरी है ताकि वो डिग्रेड हो सकें. जब वो डिग्रेड हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि वो जो उनका सबसे बड़ा मसला है कि वो पॉल्यूशन क्रिएट करते हैं, वो मामला खत्म हो जाएगा हमारे लिए. ठीक है, दैट इज व्हाई वी आर टॉकिंग अबाउट दिस वन. So if we talk about the polyesters, so remember this, polyesters can be hydrolyzed in a similar way as the simple esters do, right? So the same thing in this procedure, you will see that the formation of a carboxylic acid and alcohol groups over there. This is the same thing, right? So just look at over here. For suppose you have one of the example is, for suppose you have this one. This is one of the polymer we have. For suppose this is one of the polymer we have, right? This is one of the polymer we have, like that. If you provide them some conditions, so what can be happen with this molecule? You just need to remember this. This is going to be broken down, and you need to keep remember बच्चों, आपने ये देखना जरूरी है इसके अंदर कि कौन सा linkage ये follow कर रहा है. Just look at over here. This is ester linkage, right? This C over here, it is the same direction, right? It is in the same direction, so it's confirmed over here that it is actually natural polyester. This is actually what? Natural polyester. And when you know this is a natural polyester, you must know this, that it has a co-monomer. Co-monomers means it is just have one monomer, and in that monomer you have both type of functional groups are there. So when you break this bond and when you break this bond, you just look at over here, you get this molecule. ये molecule आपके पास आ जाएगा. This is what? This is a part of that molecule. आपके पास ये आ जाएगा. आपने इसको लिखना है इस तरह से. ये आपने इसको लिख लिया, and then you can just see over here. We know that this is a co-monomer. Carboxylic acid हमेशा अपना OH देता है and alcohol हमेशा H देता है. So this would be the monomer of this polymer, right बच्चों? Got it or not?
Yes, sir. Any problem to any of you? No, sir. चलें एक और एग्जांपल देखते हैं. This is one of the example, right? We talk about. Let's talk about second example. For suppose I just gave you this type of a structure. You have C double bond O. You have O and then this, and then you have a benzene ring over here like this, and then you have again C double bond O, and over here you have O, and then it would be CH2, CH2O, and then so on like this. This would be what? This would be one of the polymer you have. So first of all, we need to see the linkage of this. You can see this. This is C double bond O, and then C double bond. Just look at over here. They both are opposite to each other. One एक का शक्ल इस तरफ है, एक का राइट पर, एक का लेफ्ट है. They both are opposing each other. और उसके अलावा भी अगर आप देखें तो ये एक मॉलिक्यूल है जिसके दोनों कॉर्नर पे आप देखें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है. अगर इस मॉलिक्यूल को आप फोकस करते हैं तो ये आपके पास एक पार्ट है इस मॉलिक्यूल का जिसके दोनों एंड पर क्या लगा हुआ है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन लगा हुआ है, और एक ये पार्ट है जिसके दोनों एंड पर आप देखें ऑक्सीजन लगा हुआ है. तो इट इज आल्सो कंफर्मिंग दिस कि ये आर्टिफिशियल आपके पास पॉलीएस्टर है. सो दिस इज वन ऑफ द आर्टिफिशियल पॉलीएस्टर वी हैव. And once you identify this कि यार ये artificial है या natural है, then you identify this केस के अंदर कितने मोनोमर्स होंगे, एक मोनोमर होंगे या दो होंगे. So we identify this कि यार ये artificial polyester है, तो we know that इसके पास आपके पास दो मोनोमर होंगे. एक मोनोमर में दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड और दूसरे मोनोमर में दोनों तरफ आपके पास अल्कोहल होना चाहिए. तो ये आप देख सकते हैं ये बेंजीन रिंग है और इसके दोनों तरफ आपके पास क्या लगा हुआ होना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड, बिकॉज ऑल द टाइम कार्बोक्सिलिक एसिड प्रोवाइड OH. और ये जो दूसरा वाला पार्ट है इसके दोनों तरफ O लगा हुआ है. सो वी नो दैट अल्कोहल अपना हमेशा H प्रोवाइड करता है, तो हम इसमें वापस से H लगा देंगे. तो ये क्या बन जाएगा आपके पास बच्चों, ये दो मोनोमर्स बन जाएंगे आपके पास. इज दैट राइट और नॉट? Yes, sir. एनी प्रॉब्लम? No, sir. ऑल क्लियर? Yes, sir. You just need to keep remember this. If you talk about acidic and alkaline conditions, if you talk about acidic conditions, and if you talk about alkaline conditions, you just need to keep remember this: acidic and alkaline conditions. Whenever you are using, for suppose NaOH, for suppose you are using NaOH or you are using KOH, so they are alkalis. So when you are using such type of alkalis, so the carboxylic acid that you are forming over there as a monomer is actually acidic in nature. We know that. So when you are having alkali over there in that solution where acid is going to be formed, so there should be some neutralization reaction take place. So if you are using NaOH, so you will see that carbonate, you will see that C double O आपके पास यहाँ क्या बन जाएगा, आपके पास यहाँ पर Na लग जाएगा, right? और अगर आप पोटेशियम यूज कर रहे हैं तो इट शुड बी COOK. सो यू कैन से दैट कि आपके पास वहां पर सॉल्ट बन जाएगा, कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा. आपके पास क्या बन जाएगा, आपके पास कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बन जाएगा. ठीक है बच्चों, यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस. Yes, sir. एसिडिक कंडीशन में कोई मामला नहीं होंगे क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड इटसेल्फ एसिड है, तो वो कुछ नहीं करेगा. और दूसरा ये कि एसिड का अल्कोहल के साथ कोई ऐसा खास नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे कोई खास रिएक्शन नहीं है, तो वहां पर ऐसा कुछ नहीं होगा. जो प्रोडक्ट हैं वो सेम रहेंगे. बट अल्कलाइन कंडीशन में यू नीड टू सी दिस कि फास्ट रिएक्शन भी इसी वजह से होता है कि आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा होगा, फौरन से रिएक्ट कर रहा होगा तो उसके साथ NaOH के साथ सॉल्ट फॉर्मेशन इज वन ऑफ द वेरी फास्ट रिएक्शन. तो इस वजह से ये रिएक्शन थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा अल्कली कंडीशंस की वजह से. यू कैन से दैट इट वुड बी लाइक दैट, राइट? Yes, sir. And if you have amide linkage, but you need to keep remember that कि अगर आपके पास amide होगा ना, amide अगर आपके पास होगा बच्चों, तो amide जो आप जब तोड़ोगे तो आपके पास क्या बनेंगे, एक तरफ amine बनेगा और एक तरफ आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा. दिस इज एसिड. तो ये अल्कली, जब आप इसके अंदर अल्कलीज यूज करेंगे तो कैटालाइज रिएक्शन जब आपके पास होगा तो यहाँ पर आपके पास बनेगा सॉल्ट बन जाएगा डेफिनेटली ना. यहाँ पर आपके पास सॉल्ट बन जाएगा इसका. और अगर आप एसिडिक कंडीशंस यूज करेंगे तो फिर इसका सॉल्ट बनेगा, उसका नहीं बनेगा. ठीक है ना? तो ये बन जाएगा आपके पास लाइक इट वुड बी NH3 पॉजिटिव. तो ये बना लेगा. पॉजिटिव हटाना है तो यहाँ पर आप कुछ और लगा सकते हैं. ठीक है ना? सो फिर ये इस तरह से बनेगा. गॉट इट?
Yes, sir. चलें इसको करके देखते हैं, इसकी एग्जांपल जो मैं आपको बता रहा हूँ ना एमाइड वाली, ये करके देखते हैं। फॉर सपोज वी हैव नायलॉन, हमारे पास क्या है बच्चों, वी हैव नायलॉन, हमारे पास नायलॉन है एंड द नायलॉन का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, ये N2H CH2 6 then N2H bond then C double bond O and inside we have 4 back-to-back CH2s and then this would be like that, right? इस तरह का कुछ structure आपके पास नायलॉन का होता है, ठीक है ना? When for suppose we are using acid over here, so if you are using acid hydrolysis, acidic hydrolysis, you are using acid to break this bond and you will see this कि यार ये वाला bond आपके पास टूटेगा, तो it would be one of the monomer and this would be one of the monomer, so you will have what, आपके पास बनेगा CH2 back to back CH2 होंगे 6 और आपके पास ये बन गया NH2, ठीक है ना, on both sides, ये बन गया आपके पास amine for suppose, and the second monomer would be आपके पास होगा CH2 back to back 4 होंगे और दोनों तरफ carboxylic acid होगा, because you are using acidic conditions, so there would be no effect on carboxylic acid because itself carboxylic acid is acidic, but amine is alkali, so it will do reaction with that and आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि यहाँ पर हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा और इसका ओवरऑल चार्ज क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है भाई? So it will form what, salt, amine salt बना लेगा. For suppose if you were doing this alkaline hydrolysis, आप यहाँ पर HCl की जगह क्या यूज कर रहे हो, NaOH यूज कर रहे हो. If you are doing alkaline hydrolysis, so again you need to keep remember there would be no effect, there would be no effect on amine because amine itself आपके पास क्या होता है, basic होता है, there would be no effect, but because you are using alkali over here, so definitely this time carboxylic acid form salt, so it would be C double bond O and O negative, this would be C double bond O and O negative, right? You can attach metal over there. Got it बच्चों? Yes, sir. So you need to keep remember that for this you need to use dilute HCl and you need to heat, and for this you need to add aqueous सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, दोनों में से कोई सा भी यूज कर सकते हैं. पूरी ऑर्गेनिक में जहां जहां सोडियम हाइड्रोक्साइड है वहां वहां आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड भी यूज कर सकते हैं. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दैट, राइट? Yes, sir. Sir, alkaline वाले में से प्रोडक्ट क्या निकलेगा? वाले में